Good morning, students. Welcome to part 3 of our chapter number 7. I love Gujarat. In this chapter, we have seen about the tour of Flamingo in Gujarat, right? Flamingo first went to Kutch, right? It made चिंकारा चिंकारा से मिला था ना, राइट? फिर कुछ बातें कच्छ के बारे में सीखी, that the more than half of the total production of salt is produced in the small desert of Kutch. Also, the Kandla harbor is the second largest harbor of the country, and the grass growing in the Bani region of Kutch is the tallest grass, right? Then Flamingo went to Pirotan Island of Jamnagar district. There it met dolphin. डॉल्फिन ने उसको बहुत सारे वाटर एनिमल्स से मिलवाया. उधर क्या सीखा? डॉल्फिन इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ आवर कंट्री, राइट? देन द फ्लेमिंगो वेंट टू गिर फॉरेस्ट, द only sanctuary for Asiatic lions. What is a sanctuary? A protected region where animals and birds can move freely without fear and can be protected and breed is known as sanctuary. So we learn about sanctuary. Then we learn about the different hills of Gujarat, right? They were Pavagadh in Vindhyachal hill ranges in Panchmahal district, Arasur in the Araivali ranges of Banaskantha, Saputara in the Satpura ranges of Dang, and Satrunjay in Bhavnagar. So there are many small large hills in Gujarat. Then we learned about the coastal region of Veravan, right? And the last topic we discussed in the last video was the river, right? Gujarat is the region of many rivers. Which is the biggest river of Gujarat? Narmada. Which is the biggest river of Gujarat? Narmada. Okay, Sabarmati, Tapi and Maisagar are also big rivers in Gujarat. These are also big rivers, but the Narmada is the biggest one, right? Sardar Sarovar Dam is built on Narmada river and the water is supplied to many regions of Gujarat. Even it is supplied to Kutch also. The homework was you have to write the rivers of the district, the three names. Then which is the biggest river? Narmada. Then the dams located in the district. You can write the name of any dams you know of Gujarat district. Right? The name of dams you know of Gujarat district. Which are they? Okay, one you will write Sardar Sarovar, no problem. Then other many dams are there. You can write the names of any dams you know. Yes, dams of Gujarat district. Sorry, dams of dams located in your district you have to write, okay? Not Gujarat, sorry. Rivers of your district. District means Kutch. Kutch के rivers लिखने हैं, Kutch का biggest river लिखना है, and dams located in your district. So you have to write about Kutch. Then the flamingo flew from Narmada river and reached
गांधीनगर, द कैपिटल ऑफ गुजरात, कहाँ गया? नर्मदा से फ्लू होके देन he went to Gandhinagar. It is the capital of Gujarat. Visiting Amul Dairy of Anand and Kadana Dam of Mahisagar. गांधीनगर जाने से पहले दो और जगह पे गया, दैट इज अमूल डेयरी ऑफ आनंद, है ना, बिगेस्ट डेयरी, बहुत बड़ी, बहुत फेमस, बहुत सारी चीज़ें बनाती है ना, अमूल डेयरी ऑफ आनंद एंड कडाना डैम ऑफ महिसागर, राइट. Then Gandhinagar is the city of Gujarat possessing highest number of trees. Again, it can come and fill in the blanks, choose the correct option, right or wrong, anywhere. City of Gujarat possessing highest number of tree. Which is it? Gandhinagar. The flamingo also visited Indroda Park and Mahatma Mandir. These are the famous places of Gandhinagar. The flamingo also visited Indroda Park and Mahatma Mandir. From there it went Ahmedabad, situated on the bank of Sabarmati river. वहाँ से कहाँ गया वो? अहमदाबाद. अहमदाबाद कहाँ पे है? On the bank of साबरमती रिवर. साबरमती रिवर के किनारे जो शहर है बड़ा सा, that is अहमदाबाद. नर्मदा से होके अमूल डेयरी, कडाना डैम, वहाँ से गया गांधीनगर. गांधीनगर में क्या देखा? इंद्रोड़ा पार्क and Mahatma Mandir, and from there it went to Ahmedabad. This is a Gandhi ashram. जय हो गांधी बापू की. Wow, कांकरिया लेक also looks very beautiful. अहमदाबाद में क्या देखा उसने? गांधी आश्रम एंड कांकरिया लेक, है ना. फिर Nal Sarovar is a bird sanctuary situated between Ahmedabad and Surendranagar. फिर वहाँ से आगे गया, road between Ahmedabad and Surendranagar, there is a bird sanctuary, Nal Sarovar. वहाँ पे वो गया. On the onset of winter, different types of foreign birds are seen here. जैसे हमने देखा था ना, माइग्रेटरी बर्ड्स. सो इन विंटर मेनी फॉरेन बर्ड्स वेर सीन हियर. उस बर्ड सेंचुरी में विंटर में फॉरेन बर्ड्स आते थे. आई एंजॉयड इन गुजरात, एंजॉयड अ लॉट इन गुजरात, आई लव गुजरात. फिर फ्लेमिंगो बोला, अच्छा इतना सब घूम लिया, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया, आई लव गुजरात. Okay, now here the map of Gujarat is given. The map of Gujarat is given. Now fill yellow color in the districts visited by flamingo. First of all, we will list the districts which the flamingo visited. ठीक है ना. पहले हम लोग लिस्ट आउट कर लेंगे उस डिस्ट्रिक्ट को जहाँ जहाँ पे फ्लेमिंगो गया था. ठीक है. अच्छा, पहले इस लेसन की एक्सरसाइज लिखेंगे, उसके बाद यू हैव टू बाय अ गुजरात मैप, पॉलिटिकल मैप, जिसमें ये लाइंस ड्रॉ की हुई होंगी लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम नहीं लिखे होंगे. तो वैसा मैप ले लेना. यू विल गेट इट फ्रॉम द स्टेशनरी स्टोर, राइट. मैप ऑफ गुजरात, यू कैन से पॉलिटिकल मैप ऑफ गुजरात. तो एक मैप मिलेगा आपको एंड यू कैन यूज़ इट. मैं आपको सिखाऊंगी उसमें कैसे क्या फिलअप करना है. ठीक है ना. तो अभी तो आप होमवर्क है दैट यू हैव टू जस्ट लिस्ट आउट द डिस्ट्रिक्ट्स विच द फ्लेमिंगो विजिटेड. यू कैन फिल द कलर्स. लेसन शुरुआत से स्टार्ट करना. द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट वाज कच्छ, राइट. सो यू हैव टू फिल द कलर इन विच डिस्ट्रिक्ट द फ्लेमिंगो हैज. जिस डिस्ट्रिक्ट के नाम हमारे पूरे चैप्टर में आए वो सारे डिस्ट्रिक्ट आपको इसमें येलो कलर में बताने. ओके, सो दैट इज योर होमवर्क.
We will start the exercise in the next video. So in the next video, be ready with your notebook. Okay? And also bring your map, political map of Gujarat. You will get it from any stationery store. मैं आपको उसमें डिस्ट्रिक्ट भरना सिखाऊंगी. Okay? Thank you.